हाँ जी, क्लास 10th। हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.5 का फोर्थ क्वेश्चन आ फ्रैक्शन वाला है। फ्रैक्शन वाले तो मैं पहला भी दसिया कि फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन, कॉस्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन इज वाला क्वेश्चन, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक हरेक एक्सरसाइज के विच ने। ठीक है, कॉस्ट वाला क्वेश्चन तो मैं करवाया पहला। तो सैकेंड क्वेश्चन है फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन में तुसी ऑलवेज लेट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सो ये स्टेटमेंट है, मैं बोल देनी है। अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड, ये तो फर्स्ट ही क्वेश्चन हो जाएगी। इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। तो आप लेट करते हैं, लेट न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू x। मान लो पिन का अंश बराबर x, हम आप डिनोमिनेटर लेट करांगे एंड लेट एंड द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू y। पिन का हर बराबर। हम आप फर्स्ट सिचुएशन लिखते हैं, फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 1 is subtracted from numerator. If 1 is subtract from numerator, fraction becomes 1/3। जे अंश विचों एक घटा दईए तां भिन्न 1/3 बन जाती है। ठीक है जी, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखांगे। न्यूमरेटर हैगा x, 1 subtract upon y is equal to 1/3. So it is not a linear equation, it is in fraction, so we cross multiply here. Why doing cross multiply? फिर देख लो, लेट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। क्वेश्चन दे विचों लाइन लिखने, लाइन लिखने के अकॉर्डिंग की होंदा कि क्वेश्चन अपन ईजीली समझ लग जाती है। ठीक है, क्योंकि जिवें क्वेश्चन दे विच लिखा होगा उवें अपन ने एक क्वेश्चन बना लेंगे। ते बाय क्रॉस मल्टीप्लाई साइड ते लिख लांगे 3x - 1 y क्रॉस मल्टीप्लाई, तिरछी गुणा करेंगे। थ्री एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू वाई, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। वाई में आप इधर ले आवेंगे। ठीक है, तो 3 इधर चल जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सो नो सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड सिचुएशन लिखते हैं आप की है, इफ 8 is added, 8 is added to denominator, then fraction becomes 1/4। आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं, एक क्वेश्चन बनाइए भी, न्यूमरेटर x डिनोमिनेटर y प्लस करांगे 8 इज इक्वल टू 1/4। ताते पंजाबी मीडियम लिख लेंगे, जे हर विच 8 जोड़ दईए तां भिन्न
1/4 बन जाती है। जे हर विच 8 जोड़ दईए तो पिन 1/4 बन जाती है। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे 4x इधर मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, ठीक है। 1y + 8 4x 1y + 8 4x बाई ट्रांसपोजिंग 1y इधर लेवांगे 8। तो ये बन गया अपनी सेकंड इक्वेशन। तो मैं पहले ही बोलिया सी फोर्थ क्वेश्चन दे विच कि सॉल्व बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। तो आप कोई भी अलजेब्रिक मेथड अप्लाई करना। आप ये सारे क्वेश्चन कीते आ बाय एलिमिनेशन मेथड। तो इत्थे करते हैं आप विलोपन विधि द्वारा। तो ऊपर तो तुसी लिख ही लिया होना। फर्स्ट क्वेश्चन में रहने देने इत्थे solve by elimination method विलोपन विधि द्वारा। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखी हुई है फ्रॉम ए क्वेश्चन 1 and 2 1 से 2 इक्वेशन लिखते हैं। सेकेंड इक्वेशन 4x - 1y = 8। ये सेकेंड इक्वेशन। तो y के कोएफिशिएंट पहले ही इक्वल है ने, x दे जरूरी नहीं है कि x दी करने हैं, कि y दी इक्वल ही ने 1y। तो y सबट्रैक्टिंग करांगे, y सबट्रैक्टिंग घटाउण ते साइन चेंज कर देना है। Here is not any sign, so we mark plus by changing minus. Here is minus by changing plus. Here is plus by changing minus. y ना y तो हो गया कैंसल। 4 जो 3 माइनस करांगे -1x -8 जो 3 माइनस करांगे -5 x = 5 माइनस ना माइनस कैंसल। सो x की वैल्यू आ गई 5। सो नो फाइंड वैल्यू ऑफ y। पुट वैल्यू ऑफ x = 5 इन इक्वेशन 1 इक्वेशन है गया 3x - y = 3। 3 × 5 - y = 3। 15 - y = 3 -y = 3 - 15। so -y = -12 minus ना minus cancel y = 12। so fraction x over y 5/12। पेन नंबर x बटा y 5/12। हम आप करेंगे थर्ड क्वेश्चन। Josh scored 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer. Josh ਨੂੰ 40 marks मिले ने, स्कोर कीते हमने 3 marks for each right answer and losing 1 mark for each wrong answer. Had 4 marks, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन होगी। Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted. Deduct means a loss for each incorrect answer. Then Josh would have scored 50 marks. So, this is second. So, how many questions were there in the test? Total question find करने हैं, पर ऐसे let अपन जो करना है, उधर विच अपन सीधे number of question नहीं let करने, let of right answer ते let number of wrong answer. Third question है let the number of right answer is equal to x. आंसर पूरा लिख रहे थे, ठीक है। मान लो सही उत्तर वाले प्रश्न की संख्या, इतने में सीधा लिखा लेट द नंबर ऑफ राइट आंसर, ठीक है।
सही उत्तर वाले दी संख्या, प्रश्न दी संख्या। So now the number of wrong answer is equal to y। गलत प्रश्न दी गलत उत्तरां दी संख्या। हम आप फर्स्ट सिचुएशन लिखते हैं। फर्स्ट सिचुएशन है 3 marks for each right answer if 3 marks for right answer and losing 1 marks for each wrong answer Yash scored 40 marks। तो लिख देंगे जे 3 अंक सही उत्तर दे ਲਈ ਅਤੇ 1 अंक गलत अंक उत्तर ਲਈ ਕੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। सही उत्तर ਦੇ ਲਈ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਗਲਤ ਉੱਤਰ ਲਈ ਕੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 40 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ 3 ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਲਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣਾ 3x ਤੇ ਲॉस में ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਹੋਣੇ ਨੇ 1y = 40। ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੀਗਾ if 3 marks for right answer and losing 1 mark for each wrong answer Yash scored 40 marks। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। 4 marks being awarded 4 marks for right answer and deduct 2 marks for each wrong answer Yash scored 50 marks। फिर उन्होंने कितने मिलते हैं 50 जे 4 अंक सही उत्तर दे ਲਈ ਅਤੇ 1 ਹੁਣ ਇੱਥੇ 2 अंक गलत उत्तर ਲਈ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 50 अंक ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸੈਕੰਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਲਿਖਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਪੇਸ ਦਾ ਛੱਡ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, मैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ 3x - 1y = 40। ਇਹ ਹੈਗੀ ਫਸਟ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਥੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ 2 ਬਣਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ। 4 ਮਾਰਕਸ ਨੇ 4x 2 ਰੋਂਗ ਆਨਸਰ ਲਈ ਨੇ 2y = 50। ये होगी सेकंड क्वेश्चन। सॉल्व y एलिमिनेशन
मैथड विलोपन विधि द्वारा हल करते, एलिमिनेशन विलोपन, ठीक है जी। सबस्टिट्यूशन प्रतिस्थापन होता है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। हुण आ तुसीं सारा लिख लिया होगा, ठीक है, क्योंकि सेम ही सीगा। ते सैकेंड क्वेश्चन मैं बनाती। हुण दोनों ही क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ये है, सैकेंड है 4x minus 2y is equal to 50. So now here is not equal coefficient of x and y। इत्थे किसी भी गुणांक ने जिहड़े इक्वल नहीं हैगे, सो आपां इक्वलाइज करांगे, इन्हूं करांगे 4 ते मल्टीप्लाई, इन्हूं करांगे 3 ते मल्टीप्लाई, 4 ते 3 ते, इन्हूं आपां लिख दिंदे इत्थे y equalizing the coefficient of x, पंजाबी x दे गुणांक बराबर करन ते, ठीक है, बराबर करन ते आप करते हैं इक्वल 4 3 का 12 माइनस 4y 14 4 ते करांगे 160, 3 नो 4 ते 12x, 3 नो 2 ते 6y, 3 नो 50 ते 150। कई बार ना लिखते मैं अपने को तो सही लिख देनी हाँ, वो कुछ होर ही लिखा जाता है, तो तुम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही लिख लिया करो, ठीक है। तो मैं एडिटिंग तो करती नहीं, मैं जिदा ही वीडियो बनानी है मैं उदा ही यूट्यूब पर डाउनलोड कर देनी, अपलोड कर देनी है, ठीक है। तो जे तो इदा कुछ लगता है तो मैंने पूछ लिया करो, कि बच्चे पूछ भी लेंगे तो मैं उन्होंने रिप्लाई कर देनी है। तो अदरवाइज मैं कोई इदा है नहीं भी पहला मैं सॉल्व करके रखती हाँ, मेरा जिदा क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ते हैं सो मैं कर देनी हाँ। तो कई बार साइन माइनस आता मेरे को प्लस का लग जाता, एक दो क्वेश्चन इतने है भी सीगा कि साइन सही नहीं लगे हुए सीगे, ठीक है। तो वो जिदा मैंने लगे मैं उसके अकॉर्डिंग करता। फिर भी कितने ना कितने हो जाती है गलती, तुसीं उन्होंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही लिख लिया करो, ठीक है। मैथड मेरे भी सही अप्लाई किए होंगे, मैथड कोई गलत नहीं होगा, कितने कैलकुलेशन च गड़बड़ हो जाती है, माइनस प्लस माइनस, तो 12x हो गया कैंसल, इतने लिख लेना बाई सबट्रैक्टिंग। तो मैं तो कोई उलझा के नहीं समझाती, मैं डायरैक्टली सिंपल समझानी है तो ताकि तो ईजीली समझ लग जाए, ठीक है, तो सौखा समझ आ जाए। हम आप इतने 6 to 4 माइनस करेंगे 2y, ग्रेटर नंबर का साइन लेना हमेशा, इतने माइनस का होने प्लस का, प्लस चो माइनस करेंगे, देखो 6 to 4y 2y, मैं हम इतने 6y लिखी, बोलिया 2y लिखी 6y, इदा ही होर भी कई क्वेश्चन च हो जाता, तो सही कर लिया करो क्वेश्चन के बारे। 160 to 150 माइनस करेंगे 10, सो y इज इक्वल टू 10/2, कटिंग कर देंगे y, तो y इज इक्वल टू आ गया 5। हम आप y की वैल्यू पुट करेंगे क्वेश्चन 1 के इतने लिखते हैं, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि पहला क्वेश्चन समझ लिया करो, ठीक है, क्योंकि जो कितने गड़बड़ होगी तो फिर अपने आप को सही करके लिख लोगे। तो मैथड तो तुम्हें समझ आ जाऊगा फर्स्ट टाइम के, पुट वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। तो फर्स्ट इक्वेशन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40, 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 40, तो 5 here is माइनस बाय ट्रांसपोजिंग, इधर है कि प्लस हो जाएगा, 3x 40 प्लस 5, 3x 45, x is equal to 45 upon 3, 3 multiply by transposing divide, 15, x is equal to 15, y is equal to 5,
क्योंकि इत्थे क्वेश्चन दे विच पूछा होया है हाउ मैनी क्वेश्चन वर इन द टेस्ट, सो प्लस कर देंगे अपन 20 क्वेश्चन इन द टेस्ट। टेस्ट विच टेस्ट विच 20 प्रश्न, हाँ ठीक है जी। बार सन मामूली गल्लां ने इन्हां कोई मायने नहीं रखदियां, तुहानूं मैथड समझ आने चाहिए, मेन चीज़ समझ आनी चाहिए भी अपन पेपर ते क्वेश्चन स्टेटमेंट चेंज होके भी आ जाते हैं, ठीक है, तो तुहानूं मैथड समझ होने चाहिए जो मेन चीज़ है। तो ये सीगा थर्ड पार्ट।